Assalamu alaikum everyone. This is Zulfikar Sumro. I welcome you here in this channel Learn Mathematics by Fun. मैं आपको वेलकम करता हूँ इस चैनल में। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चैनल को ओपन किया और इस वीडियोस को देखने की हिम्मत अफजाई की। सबसे पहले तो आज हम इस लेक्चर नंबर 6 में सीखेंगे कि हाउ टू लर्न फाइंडिंग स्क्वायर्स। बेसिकली स्क्वायर होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्वायर इज़ अ नंबर in which you multiply a digit by itself, that is called square. In introduction we defines always the topic. So basically square is a multiplication of a digit with itself, that is called square, whose examples are being given below. That 1 multiply 1 equals to 1, 2 multiply 2 equals to 4, whereas 3 multiply 3 equals to 9, as same as 4 multiply 4 equals to 16. So let's remember that if you get your squares and roots mixed up, keep in mind that squaring a number is as simple as multiplying it by itself. There are 3 to 4 steps for learning square and finding squares. Here we are finding squares. First I am asking you about the 4 steps, that how will you find the square. The first step is that when you square a number, you have to simply multiply a number by itself. So it's important to know that how to multiply. So for that you have to know about the process of multiplication. To make it easier to square, commonly use single digits. Okay, like I have used 1 square equals to 1 and 2 square equals to 4. As same as 3 square equals to 9, whereas 4 square equals to 16. Here it is asking about that if the length of one side of a square is 2, then its area is, we have to find the area of this square whose 2 square equals to 4. And if we get a radical of 4, we get same sides is called as 2. Okay, अगर हमें ये मेजरमेंट्स मिली हुई हैं कि 1 का स्क्वायर 1 कैसे हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 कैसे हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 कैसे हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 कैसे हो रहा है। ये मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप बताता चलूँगा। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आप ये सीखिए कि किसी भी सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कैसे हासिल करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि मल्टीप्लाई द सिंगल डिजिट नंबर बाय इटसेल्फ. Write down the number you want to square. Remember that when you are squaring a number, you have to multiply it by the same number, not an other. This is the second rule. The most important rule is that you have to multiply the same digit with itself. Like in previous slide, in this 1 square, we have multiplied 1 with it, the same number 1, and we got 1 as answer. These are the perfect square for a single as well as double numbers. For example, 1 square equals to 1, 2 square equals to 4, 3 square equals to 9, 4 square equals to 16. As same as if you multiply 5 with the 5, we will get 25 as answer, which is the square of 5. As same as 10 square equals to 100, which is answer of 10 multiplication 10. So coming towards the step number 3, we have to recognize the terms for squaring a number. If we have been given a word problems asking you a square of number, keeping in mind that they may also ask you to raise the number of 2 power of or factor. So square basically power होता है किसी भी नंबर का पावर. जैसे ये 1 है तो इसका पावर है 2, मतलब कि हमें 1 को 2 मरतबा ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई 1, 2 पावर 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 को हम 2 दफ़ा ज़रब करेंगे, हमें स्क्वायर मिलेगा 4. अगर हमारा पावर 3 होगा तो हम कहेंगे क्यूब, अगर 4 होगा तो हम कहेंगे quadrupled. This is a single multiplication process that I have multiplied for getting the square of 3. That 3 multiply 3 equals to 9. So 3 1 the 3, 3 2 the 6, as well as 3 3 the 9. As same as that 5 5 the 25. I have defined the process of double multiplication for finding the square of 12 as well as 13. So मैंने ये मल्टीप्लाई किए हैं कि 12 को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करें. सबसे पहले आप ये प्रोसेस सीखेंगे कि 2 2 ज़ा 4. सो 2 को आप फर्स्ट रो से डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 ज़ा 2, गिविंग द सैम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 2 ज़ा 2 एज वेल एज 1 1 ज़ा 1. देन वी ये आप याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमारी एडिशन साइन से रिजेंबल होती है, वेयरएज डिवीजन जो होती है वो हमारी सब्ट्रैक्शन साइन से रिजेंबल करती है, आइडेंटिफाई करती जाती है.
इस वजह से तो हम ये एडअप करेंगे 4, 2 + 2 = 4, 1 का 1 सेम आएगा, हमारा आंसर होगा 144 विच इज कंसिडर्ड एज ए स्क्वायर ऑफ डिजिट 12. एंड फॉर फाइंडिंग with the same procedure square of 13 multiply 13 we'll be getting as 169. How? 3 3 the 9, 3 1 the 3, and we'll be multiplying 1 to the digits 1 and 3. 1 13 is the 13, so 9 same रखेंगे, 3 + 3 6 1, and ये हमारा हो गया स्क्वायर. Being a square keeps you from going around in circle. Thank you. अगर आप स्क्वायर रहेंगे बनना चाहेंगे और बन के रहिए, क्योंकि आप जो माशरे में जो भी आपके हालात होंगे, सर्कल जो आपका होगा, एनवायरनमेंट होगा, आप उससे बच के रहेंगे बीइंग अ स्क्वायर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.